So we are going to start today classical electrodynamics. So हमारा ये होगा our plan or our modus operandi. Modus operandi समझते हो? There is something called modus operandi and something called. So if we will section, we'll cut it. We will not dissect it. We'll say how we are going to operate. Our mode of operation would be through this book of classical electrodynamics. So which is also in yourself. So what we are going to do is we are going to study chapter 1, 2, 3 in detail. 1, 2 and 3. And there are portions of 4, 5 and 6. Some portions which are required in your syllabus. Okay, which will cover whatever your course is. Okay. So chapter 1, 2, 3 we will study in detail. So before chapter 1, there is also an introductory chapter, okay, which I will recommend you study on your own. How classically electrodynamics as a subject has evolved, which you have studied in your earlier classes. Means every branch of study जो भी होता है, it's not clean in the sense जो हमारे पास Maxwell's equation आ रही है ना, finished product, वो 4 equations. You study in 21st century या हम पढ़ते हैं ये 4 equation है, but it was not like that always. So it had some history. People first believe in amber, फिर stones, then फिर combs are attracting, फिर वो Franklin का whatever that history is. फिर Priestley's experiment in Cavendish experiment to find 1 by R square law. 1 by R square law, the way we are studying in classical mechanics. So basically, the Coulombic attraction is also 1 by R square. But it had an experimental proof in lab. So this book has discussed that everything in detail. So I recommend you go through that everything. The attempts by Cavendish and other people to prove this 1 by R square law. Okay? And the thing is that once we say something is classical, means the field in which the charges are operating, they can take any value. Classical means any value. When we talk of quantum electrodynamics, means the values are specified in terms of elementary quantum of action. So field or charge can take any value. And also there is also a property associated with classical. एक तो हो गया, it can take any, and there is also a continuum property. The fields are continuous. They may gradually increase, or gradient of a potential will give you a field. The gradient may increase or decrease gradually or whatever, but it's not sudden नहीं होगा उसमें एक discontinuous jump नहीं होगा. That charged particle is moving and suddenly it will jump. There will be the continuous thing. So in this whole of subject, we are not only going to study electricity charge at rest, which includes electrostatics, but charge in motion also, which means ये हो गया charge, this is charge, dynamics means motion, and classical you can see. Classical means if you want to study it in terms of mathematically, it can take any value. So in 3 things you have to study. Now we are going to rehash some of the things which you might have studied in your earlier classes, electrostatics in your class 11th. Okay, but here if you have studied Griffith, तो उसमें भी है ना how we study Coulomb's law, Gauss's law, and Gauss's law की various implications. You might have studied Stokes theorem, Gauss divergence theorem, है ना? या Coulomb's law को भी why we need to go, आप अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं कि Gauss's law is useful but it's not always उसका मतलब क्या है? ये जो हमेशा मतलब एप्लीकेशन मतलब हमेशा यूज होती है. Why? Because Gaussian surface हमेशा exist करता है. Surface should be closer. Basically ये भी आपने कहा, this answer is in bits and pieces.
But the proper answer is Gauss's law exploits the symmetry of the surfaces. The very definition of Gauss's law is E dot ds. If the surface is symmetrical, the enumeration or the calculation of E fields, it becomes helpful. While in case अगर हम Coulomb's law अप्लाई करेंगे तो उसमें जो surfaces उसमें वही प्रॉब्लम करने में the integrals may come out to be cumbersome, थोड़ा सा procedure longer आएगा. But you can also do the same thing the other way around also. So where the surfaces are not symmetrical, where they are non-symmetrical, we have always taken the course to Coulomb's law plus superposition principle. है ना? The other statement is Coulomb's law plus superposition is all that we need to know in electrodynamics, electrostatics. यही पढ़ते हैं ना? ये line. Coulomb's law plus this superposition principle. ये दो चीजें अगर पता होगी, so इसका मतलब given charge and given force आप कहीं भी हमको basically at the end of the day we have to find field at a given point. Whether the field may be due to charge, bunch of charge, field inside a charge sphere, hollow sphere. So these are all examples: line charge, surface charge, charge sphere, which is not hollow charge sphere. So field inside and outside. We have done all the problems. We can do the same thing by Gauss's law as well as Coulomb's law plus superposition, either by Gauss's law and exploiting the symmetry of given surface, or Coulomb's law plus superposition principle. So these Gauss's law plus I'll say symmetric considerations. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर की अपनी एक सिमेट्री होती है, ठीक है, लाइन चार्ज की अपनी सिमेट्री होती है. सो ईदर वी रिक्वायर दिस थिंग और बट टू फाइंड फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, है ना. द फील्ड में भी टू द पॉइंट चार्ज है, फिर वी कैन एक्सटेंड दिस एक्सप्लेनेशन टू रियल फील्ड्स. ये सन है, इट्स अ प्लाज्मा, है ना, वहां भी चार्ज आर मूविंग इन द सेम. आपका बैटरी का फील्ड है, ठीक है, एनी फील्ड, ठीक है, फील्ड ड्यू टू विच एवर यू कैन, वेयर एवर यू कैन इमेजिन फील्ड कैन बी, we can just find field हमको निकालना है. अब वही है कि more or less जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है ना, it comes in application. ये तो आप पता है application. How we can find an electric field in a given concrete setting, in a given concrete, even a given example, which you can have if you study about Griffith की बहुत सारी books, solved or unsolved book आप at least पढ़ोगे या देखोगे. This book also has a lot of good problems. Once you attempt those problems, you will try, आप निकाल सकते हैं electric field at a given point क्या है, whether the charge is symmetrical or not, or also the consideration is, for example, अगर charge है यहाँ पर तो यहाँ it's a symmetrical surface. It's not necessarily the surface is symmetrical. इसकी topology is a geometrical term, mathematical term. It may be not be a symmetrical topology. तो normally हम क्या करते हैं, हम चार्ज ऐसे रो dv इसका इंटीग्रल निकालते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, है ना. दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. मगर मसला ये है कि if the surface is symmetrical तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 1/4/3 पाई आर क्यूब. या हमारे पास सिलेंडर में जैसे ये तार है हमारे पास, ये हम टेक इट एज एन अप्रोक्सीमेशन, इट्स अ सिलेंडर, है ना. तो हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, तो चार्ज इनसाइड क्या है, इट बिकम्स इजियर. बट नेचर में ये चार्ज may not necessarily move through cylindrical surfaces or symmetrical surfaces or surfaces whose topology is very simple or whose geometry is very simple. तो उसमें हमको मसला आता है कि you need to have recourse to our understanding of integration कैसे करनी है for non-symmetrical surfaces जिनमें वो चार्ज है, ठीक है. And the problem becomes a bit complicated. तो you have to do, जो आप रियल मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस पढ़ते हैं, you have to study कि how we can find volume of non symmetrical surfaces. जब आप निकालते हैं ना approximate method, एक वो numerical integration या whatever integrations they are. So where the charge is located, so we can find electric field due to those charges around those unsymmetrical surfaces also. ठीक है? So those are details. Or nature is much more complicated than what we are going to study in this book or there in this blackboard. ठीक है, अब इस बुक में या किताबों में जो अक्सर आता है
इट्स वेरी इन द जो हम रेप्लिकेट कर सकते हैं लैब में सिमेट्रिकल सरफेस या ठीक है. दोज एग्जांपल्स आर देयर इन बुक्स. जो तार है हमारे पास इवन इंजीनियर्स भी अप्रोक्सीमेट लेते हैं सिलेंडर. तार भी जरूरी सिलेंडर नहीं हो. इफ यू हैव एन फिजिसिस्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स यू आर गोइंग टू हैव exactness. ठीक है, then you have to take into consideration those things also. Okay, so this much is this. Now if we study chapter 1, is electrostatics. So you start with some of the things we are going to them. थोड़ा सा इसका आप we are going to rehash since we start from the beginning. So Coulomb's law you know. अब इसमें I'll just straight away say varies with the magnitude of charge. या Q1 Q2 है ना. अब इसमें सिर्फ ओनली वन एक क्वालिफिकेशन क्या है चार्ज ऑलवेज कम मास जैसे है इट्स ओनली ऑफ वन काइंड है ना. प्लस नहीं मास कम्स ओनली ऑफ वन और मास इज ऑलवेज अट्रैक्ट. चार्ज विल कम इन टू फॉर्म इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और प्लस लाइक चार्ज अट्रैक्ट एंड बाकी the form of law of gravitation and Coulomb's law is same. And the sort of calculations we did for centrically bounded potential, they can be applicable here also. जो हम classical mechanics में calculations करते हैं ना, वहाँ हमने किया इसके लिए mass के लिए. Here we can do the same thing charge के लिए, because the potential is also 1 by r square. ठीक है? The thing is, but only the thing is कि charge comes in two varieties, mass comes in only one kind. ये है Coulomb's law. आप अब ये है कि आप I'm not going to repeat it. आपको पता है 1/2 epsilon naught r square है ना. Permittivity of free surfaces जो भी है आप पढ़ते आएंगे. So I'll skip that. So in the same way we have Gauss's law. अब ये है कि you might have studied Gauss's law in differential form. ये Gauss's law आपने सिंपली पढ़ा है. E dot ds is equal to closed integral का E dot is equal to q by epsilon naught है ना. ऐसे पढ़ा है आपने Gauss's law की जो ऐसे. ठीक है. और we can say dA is equal to, if I just follow the notation of the book, he writes it like this: cos theta. Can you write it like this? You can have yesterday जिस तरह आप solid angle पढ़ते हैं ना, Q cos theta. So अगर given charge है उसका surface at surface पे sin angle and cos angle, जैसे आप पढ़ते हैं ना line charge में Q sin theta, two forces will cancel. We only take Q cos theta, जो भी depends on that very thing. So in a given closed surface you can see it that way. अगर perpendicular होगा तो sin cos of if it's perpendicular to the surface, so sin 0 is equal to 0, so we will only take this thing into consideration. Or this thing we can denote as solid angle also. It's electric field का dot product with regard to that area element. With regard to that area element is equal to Q times Q by 4 pi epsilon naught. This cos theta dA by r square, इसी को हम can also denote by, जिस तरह मैंने कल कहा था आपको solid angle, we take it for a given cone, फिर उसी को integrate करते हैं along whole of the volume. So in the same way you can take cos theta, ये dA है,
डी ए है क्या है आर डी थीटा आएगा, ठीक है। सो डी थीटा गोज फ्रॉम इन ए गिवन वॉल्यूम, इफ इट इज आर इट्स आर डी थीटा, तो ये आर है तो क्या आएगा आर डी थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा टू पाई बाई 2 या पाई, ये आएगा माइनस पाई बाई 2। तो अगर पूरा सरफेस लेंगे तो 2 पाई आएगा, अगर इतने में लेंगे तो यहां से यहां तक आएगा पाई आएगा। अगर पूरा लेंगे, पूरा वॉल्यूम ड्यू टू दैट सरफेस कितना फ्लक्स है, तो वी हैव टू टेक, so we are going to denote it notationally by only by solid angle. Got my point? So this is the point. So if you integrate it over by whole surface, it will be dA this is if Q lies inside the surface, inside S, outside S, आउटसाइड एस के लिए जीरो क्यों होगा शबाश, कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन सी व्हाई ई डॉट डी एन इज एस? Because as per laws of the charge should be enclosed inside the surface, but outside the surface enclosed, then charge should be हाँ है ना, मतलब जो जितना आ रहा है बाहर, दिस कंपोनेंट विल कैंसिल विद दिस कंपोनेंट, सो नेट इट विल बी जीरो। जितना बाहर से आ रहा है उतना ही अंदर से बाहर भी जा रहा है, ठीक है। If the charge is inside, you can say the flux which is cutting the surface. But if the charge is outside the surface, जितना यहाँ से आ रहा है उतना ही बाहर भी net flux. This is one way of physically one way of. So you are saying it invoking Gauss's law of diffusion. वो भी explanation है, but you can say this way also. Net flux जो भी आ रहा है. अब इसका differential form क्या है? You might have studied in your graph with graph. तो we are going to take या इसको E dot, another way of writing this E dot n dA can also be written as 1 by epsilon naught rho dV d3x। लिख सकते हैं इसको ऐसे कि नहीं? Right. It is net charge per unit volume। ये है ना, अगर इंटीग्रेशन ऑफ द डीवी है, ये टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम कट जाएगा, तो दैट्स चार्ज d3x इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स वॉल्यूम एलिमेंट है, ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट है ऑफ द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, दैट विल गिव अस दिस क्वांटिटी। अब डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म गॉसेस लॉ की। So again we are going to use our जो हमारी definition of है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में है सरफेस इंटीग्रल, राइट हैंड साइड में है वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, by what? Gauss divergence theorem, ठीक है। So you might have done those exercises here, लेफ्ट हैंड साइड में if total सरफेस से कितना निकलता है फ्लक्स, that depends upon the divergence of the in that any field, it's not any fluid scale बोल सकते हैं। कोई भी नेट अनक्लोज सरफेस में, फॉर एग्जांपल यहाँ एक बड़ा होज है ना, यहाँ नेट वाटर डिफरेंशियल ऑफ द वाटर विच इज मूविंग एट अ गिवन पॉइंट, एक कोने से उस कोने से उस कोने से कितना निकलेगा आउटसाइड दिस रूफ। एक तो इनका डिफरेंशियल क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाउ दे आर मूविंग फ्रॉम द डिफरेंट होल्स, एंड नेट सरफेस के साथ कितना वो फ्री निकलेंगे बाहर। सो डिफरेंशियल ऑफ द दैट फ्लक्स और दैट चार्ज क्या है, एंड इट्स बीइंग एनक्लोज, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू कितना निकल रहा है सरफेस से बाहर। और अगर क्यूब है तो 6 फेसेस ऑफ क्यूब से कितना निकल रहा है, अगर स्फीयर है तो सरफेस ऑफ स्फीयर से कितना निकल रहा है, अगर एक ही साइड ऑफ ये है स्क्वायर है तो उससे कितना निकलेगा, तो आपको लेंथ स्क्वायर आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ दैट लेंथ।
So since we are interested in the charge and interested in the flux in that language, so first if we follow the book, he has used the term, इसने सीधे चार्ज यूज नहीं किया, इसने ए को यूज किया, बट समटाइम्स लेटर एक कंफ्यूजन ये हो जाता है, ये स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं टर्म, ठीक है. So rather we would rather use it this way. So it's only to show that left hand surface, how surface integral can be of a given quantity can be related to the volume integral of the same quantity. ठीक है. ये जो डेल है ना यहाँ पर, ये डेल क्या है बेसिकली, ये डेल है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ डी बाई आई जे के. डॉट प्रोडक्ट किसका है, एनी क्वांटिटी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस, सो यू कैन सी दिस क्वांटिटी इज इसका डिफरेंशियल, स्पेस डिफरेंशियल मीन्स स्पेस डेरिवेटिव along x direction, along y direction, along मर स्पेस डेरिवेटिव किसका, इस क्वांटिटी का. तो इसमें इफ यू टर्म बाय टर्म इसको निकालेंगे ना, इसमें 9 टर्म्स आएंगे, ओनली 3 टर्म्स विल सर्वाइव. व्हाई? देखो आई डॉट आई cos 01, आई डॉट जे 90 0 आएगा. सो ये स्पेस डेरिवेटिव है इस क्वांटिटी का, जिसके भी अपने 3 कंपोनेंट्स हैं. And this quantity A can be any quantity, can be electric flux, it can be fluid का कोई भी उसका flow, ठीक है, कैसे फ्लो कर रहा है इन गिवन सरफेस. यहाँ पर कंसंट्रेट E फील्ड, फ्लक्स या B फील्ड जो भी है हमारे पास, ठीक है. तो इसका स्पेस डेरिवेटिव, कंपोनेंट्स ऑफ द स्पेस डेरिवेटिव vis-a-vis this quantity, that will give us this quantity in terms of, that should be equivalent to the, as if we are calculating the surface integral of the same quantity. समझ आया? सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट सरफेस इंटीग्रल मींस आउटसाइड सरफेस का कितना वहां से निकला, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू द कंपोनेंट्स ऑफ दैट डेरिवेटिव, उसका डॉट प्रोडक्ट विद रिगार्ड टू दैट क्वांटिटी. इसी को हाउ वी कैन रिलेट सरफेस इंटीग्रल विद द वॉल्यूम इंटीग्रल. और इस साइड डॉट प्रोडक्ट है, इस साइड ये डाइवर्जेंस है, ये क्वांटिटी है. And there are enough examples, you can just go in Grift and check it out for yourself. अब इसी को अब अगर हम in terms of E A को हम represent करेंगे, हम in terms of E field, ठीक है. So this is another way of writing. चलो ये तो हमने लिखा अभी. So we can also write it like, so E dot dn किसके बराबर है? So if you just, ये चार्ज inside है, E dot, so E dot dn है ना, E dot dn. So you want to write it in terms of del dot, ये है ना E dot, E के बदले आप लिखो E यहाँ पर, ठीक है. वी सबस्टिट्यूट ए के बदले ई, तो यहां आएगा ई डेल डॉट ई d3x. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, डेल डॉट ई d3x इज इक्वल टू 1 by epsilon naught rho x d3x. अब इसमें हम एक काम करेंगे, we'll subtract this from this. So del dot E minus rho x dx किसके बराबर है शाबाश? 0. सिंस है ना वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ स्पेस इट विल बी 0, integral it will be 0. So del dot E is equivalent to rho by epsilon naught. इसी को हम कहते हैं Gauss's law in differential form. So we have
exploited our understanding of Gauss divergence theorem, how we can relate surface integral with a volume integral, and extracted the Gauss's law की differential form को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, using Gauss divergence. So it's a simple exercise, ठीक है. So this much. Sir, what is this concept? What? Divergence of E. हाँ, divergence of E, ये मैंने कहा था ना, we are using जो here it's any field, any quantity. हाँ, तो यहाँ हम surface integral of a given quantity how we can relate to the volume integral, ठीक है, of a given quantity. अब ये है कि we are changing this A, definition of A in terms of E. How E dot n, उसका surface integral, how we can relate it with the divergence of electric field in a same volume integral. We have only switched this definition, इसको हमने we have written it here. We are using Gauss divergence theorem here. अब जो E dot n को हमने ऐसे लिखा, we simply use Gauss divergence theorem in the extraction of this definition. So अब इससे ये हमको फायदा पता चला. What is del? Del, it means, आप देखो यहाँ पर d by dx of I So we say divergence. Divergence किसी पॉइंट से अगर कोई चीज, हाँ, अब देखो अगेन, सो यहाँ पॉइंट ऑफ पॉइंट है ना, स्पेस डेरिवेटिव जो ई फील्ड है इसका स्पेस डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी फ्लक्स का एक्स डायरेक्शन में नहीं, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली चेंज, नो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, मतलब ई फील्ड का कंपोनेंट्स कैसे चेंज होते हैं स्पेस में, इन अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, इलेक्ट्रिक द क्वांटिटी ई फील्ड्स के कंपोनेंट्स कैसे चेंज होते हैं अलोंग एक्स रेट ऑफ, अलोंग वाई, अलोंग, इस तरह वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ इट चेंज अलोंग दीज डायरेक्शंस, उसी का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं इस तरह. दैट शुड बी गिवन एज इफ इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल चार्ज व्हिच इज कंसीडर्ड इनसाइड दैट वॉल. it gives us total charge. Right? It depends upon that thing. It depends upon the total volume charge inside the surface. It's equivalent to that. अगर चार्ज यहाँ जीरो होगा तो दिस क्वांटिटी विल बी जीरो. उसी का एक सॉल्यूशन है, ठीक है. इफ द चार्ज इनसाइड इज जीरो, सो व्हाट्स द ये इसका डाइवर्जेंस विल बी जीरो. So it comes more or less, इसका जो intuition आता है ना, once you are applying things gradually it comes. So I recommend you, there is a book by Purcell. तो उसने he has first 2, 3, 4 chapters, ठीक है, E field, B field. So he has, उसने बहुत अच्छी बातें की हैं उसमें, है ना, कहीं बात करते हैं ना कोई E field, B field. So go and study आसान language में, in a very simple way, ठीक है. And after that you study this book of first chapter for introduction. And जो more harder exercise है, you attempt the solved or unsolved problems of Griffith without looking to the solutions. Without solutions available है हर जगह, but without cheating your own self, उनको attempt करो आप. You will gradually guess इसका एक intuition अपना आएगा आपको, ठीक है. So this is यहाँ stop here आज, चलो ठीक.